Good morning, students. See the information of the lecture first. Essentials of English grammar book we are reading. And class 8 subject English. We are reading relative clauses and this is lecture number 2. Right, everyone? So we are going to start from where we left. We were discussing which and that. विच के बारे में तो हमने रीड आउट कर लिया. विच इज यूज्ड वेयर वी टॉक अबाउट द थिंग्स. जब हम चीजों की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, देयर वी यूज जस्ट विच. Where where are the books? They were lying on the table. Where are the books which या फिर that were lying on the table? Like this we can make the subject of the sentence which or that, right? Things के लिए हम लोग ये use करते हैं. The syringe which या फिर that has been used once should be immediately disposed of. I work for a company which produces gas stoves. I don't like movies which that show excessive violence. By this we completed yesterday. Let's see the next one, that. That can normally be used in place of both who and which. Now see students, that को जो हम लोग which और who की जगह दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर वी हैव टू यूज दैट. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम केवल दैट यूज कर सकते हैं. ये पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था. वी यूज दैट आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में आएगी तो उसके बाद हम लोग हु नहीं लगा सकते हैं. इफ वी यूज देयर हु, द सेंटेंस विल गो रॉन्ग. देयर वी नीड टू यूज दैट. See the example. Dr. Mehta was one of the best speakers that spoke on naturopathy. So that जहां पर हमने लगाया है the best speaker, the best जो है वो superlative degree है. So हम यहाँ पर नहीं लगा सकते the best speaker who spoke on naturopathy. जब हम superlative degree को यूज करते हैं, there we use that as a connector or as a relative clause, relative pronoun of the sentence, right? This is the most ridiculous movie. Most जो है superlative degree की तरह यूज हुआ है. That has ever hit the screen. So that जो है ये ridiculous movie के लिए यूज हुआ है. लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे which आए चाहे who आए, अगर ये superlative degree की हम बात करेंगे तो वहां पर केवल हम लोग that यूज करेंगे, ना कि which यूज करेंगे और ना कि who यूज करेंगे. Right? See the last one. We use that after the words all, any, anything, none, nothing, etc. This is all that I possess. अब all लग गया तो that आ गया. अगर all लग गया तो who या which थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग. So this is what we need to remember the things. We need to practice the things. She approved of nothing that I did. अब nothing आ गया, that means we can't use here which. So we shall use there only that. Let's see the next one. If we needed a word to refer a person and a thing, that we would naturally use that. अगर एक ही सेंटेंस के आप अंदर आपको पर्सन को भी यूज करना है, ह्यूमन बीइंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी यूज करना है, so you get confused whether to put there who or which. So best option is to put there that. Both the bird and the nest that were shown in the picture appeared to be strange. So ये that जो है ना, bird living और nest जो non living है, दोनों के लिए यूज किया गया है. So you just need to be careful, need to remember these 3 points only. उसके बाद आता है that or what. What cannot be used in place of that. What जो है that की जगह पर यूज नहीं किया जा सकता है. What is equal to
the things that, say एग्जाम्पल देखो, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स दैट हैपेंड। वर्ड जो यूज हुआ है वो थिंग्स दैट हैपन, जो चीजें, जो काम, जो बात हुई है उसके लिए हम लोग वर्ड को यूज करते हैं। आई एम सॉरी व्हाट हैपेंड, आई एम सॉरी द थिंग्स दैट हैपेंड। द थिंग्स दैट हैपेंड जो यूज हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ पे दैट वर्ड यूज करते हैं। एंड नॉट आई एम सॉरी फॉर दैट हैपेंड, ये गलत हो जाएगा। दैट हैपेंड जो है सेंटेंस को रॉन्ग करता है। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट हैपेंड, नॉट ऑल व्हाट, राइट, ना कि वो जो सब हुआ है सिर्फ एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तब वो सही है ऑल दैट हैपेंड। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं द थिंग दैट हैपेंड, दैट गोज रॉन्ग। सो नॉट को आप देखो, इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट हैपेंड इज नॉट अ रिलेटिव क्लॉज, देयर इज नो नाउन और प्रोनाउन दैट इट मॉडिफाइज। देखो उसमें कोई किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई वो नहीं कर रहा है। इट इज इनफैक्ट अ नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन फॉर, जो ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन फॉर उसका जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इन द सेकेंड सेंटेंस। दैट हैपेंड इज अ रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइंग द प्रोनाउन और इस पूरे प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो। So you just need to practice, children. Now you see some words are given in the box. कुछ words box में दिए गए हैं. Choose the right meanings from the ones given below and then write a sentence with who for oral practice. अब who के साथ जो है आपको जो है ये sentences बनाने हैं. ब्रैकेट इसके बॉक्स के अंदर बॉक्स है एन आर्किटेक्ट, कुछ वर्ड्स देखो, एन आर्किटेक्ट, एन ऑडिटर, a martyr, a feminist, an optimist, a geologist, an astronomer, a pessimist. अब सेंटेंस की सेंस को पढ़ने के बाद आप ये जस्टिफाई करोगे कि क्या वर्ड आएगा इनमें से। सीधा सेंटेंस मैं आपके लिए दो सेंटेंस करूंगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू ऑल विल डू इट योरसेल्फ, you all will do it yourselves, everyone. See the first sentence, he oblique she looks at the dark side of things. डार्क साइड कौन देखता है? जो पेसिमिस्ट होता है। तो सेंटेंस बन गया हमारा अ पेसिमिस्ट। देखो एक वर्ड उठाएंगे बॉक्स में से अ पेसिमिस्ट और उसके बाद लगाएंगे हु, ठीक है। अ पेसिमिस्ट इज अ पर्सन, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी एक हम लोग प्रोफेशन चूज करेंगे, जैसे अ पेसिमिस्ट लगा के लिख देंगे इज अ पर्सन, फिर लगाएंगे हु और उसके बाद जो ये सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे सब्जेक्ट को कट करके, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह हु आ चुका है। सो अ पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, राइट एवरीवन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक वर्ड पहला उठाएंगे इसमें से, अ पेसिमिस्ट हमने उठा लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इज अ पर्सन, कि भी एक ऐसा आदमी है हु, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हु को हम लोग उठाएंगे और फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे आफ्टर लिविंग द सब्जेक्ट, क्योंकि हु जो है अपने आप में सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस का। सो ये बन जाएगा अ पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। See the next sentence. He oblique she lays down his oblique her life for the sake of country. कौन होते हैं जो देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं? शहीद होते हैं ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं मार्टर्स। These are called martyrs. ये सारे के सारे मार्टर्स होते हैं। सो हम बनेंगे अ मार्टर इज अ पर्सन हु, सेकंड सेंटेंस देखेंगे अ मार्टर इज अ पर्सन, मार्टर हमने ऊपर बॉक्स से उठाया, मार्टर होता है शहीद जो होते हैं। अ मार्टर इज अ पर्सन हु लेज डाउन हिज ऑब्लिक हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, right everyone. So that's enough for this exercise. Rest of the exercise sentences you all will do it yourselves. So let's go to the next, omission of who, which, that. Omission means कि कब और कहाँ हम लोग जो है who और which और that को जो है छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, right? It is sometimes possible to omit who, which, that from the relative clause. Let's take some examples. The surgeon who did the operation very competent. ये who जो यूज हुआ है
सर्जन के लिए यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर हु को जो ओमिट कर सकते हैं, हम सीधा ये लिख सकते हैं द सर्जन डिड द ऑपरेशन वेरी कॉम्पिटेंट। हु इज इक्वल टू द सर्जन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिड। तो यानी कि हम ये हु को जो है ओमिट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू राइट हु हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव लॉस्ट द बैग व्हिच contained many insurance papers। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, I have lost the bags contained many insurance papers, right? This means which is equal to the bag, the subject of the verb contained. We must use who which that if it is the subject of the relative clause। हमें जो है ना इस तरह से इसको यूज करना होता है, जो रिलेटिव क्लोज है वो ये विच हु दैट उसका सब्जेक्ट बन सके, और सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हो तो हम जो है उसको यूज नहीं करेंगे। राइट एवरीवन, वी कैन नॉट से आई हैव लॉस्ट, right everyone, we cannot say I have lost the bag contained my, इस तरह से तो हम नहीं बोलेंगे। we cannot say I have lost the bag contained। This part you can read it yourselves because it's only a reading for the reading sake। Next देखो, but sometimes who which that is the object of the verb। For example, अब example देखो, the CD player that I wanted to buy was beyond my means। So जो CD player है वो क्या कर रहा है, ये I wanted to buy CD player ये object का क्या कर रहा है, the CD player that I wanted to buy was beyond my means। खर्चे means होता है expenditure money, that is equal to CD player is the object of to buy। जो to buy verb है इसका object है that यहाँ पर जो the CD player है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पुलोवर विच सलोनी नीटेड प्रूव्ड वेरी यूजफुल। और जो सलोनी ने नीटेड किया, जो नीट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ये पुलोवर विच, राइट, विच इज इक्वल टू द पुलोवर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नीटेड। व्हेन हु विच दैट इज द ऑब्जेक्ट वी कैन लीव इट आउट, उसको जो हम लोग छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव इट आउट। We can say the CD player I wanted to buy was beyond my means। कि जो CD players हैं, what we need to understand कि वे जो CD players हैं I wanted to buy was beyond my means is correct। That means we can omit what or that, right? Which, who, the pullover Saloni needed proved very useful। Even here also we have omitted। So see children, what we need to understand, we just need to omit when we find that the relative pronoun is working as an object, right? So this will help us to understand omission, how to understand this in a proper way, which helps us to just understand the grammatical skills in a proper way। So see children, when you talk about the omission of the relative pronoun, there you just need to understand if it is functioning as an object, there you'll omit this। If it's working in the subject or as a subject, that will remain same। Let's go to the next, prepositions in relative clauses। और prepositions का use हम लोग जब relative clauses को लेकर के करते हैं वो कैसे करते हैं, how it works। Notice the position of preposition to, at, with, etc. in relative clauses। अब relative clauses के अंदर जो preposition use हुई है उसको हमें notice करना है। I can't find the books, I can't find the books, I'm looking for them, राइट। अब ये फोर सिंपल सेंटेंस में आ गया। अगर आप इसको रिलेटिव के साथ लिखोगे तो लिखोगे ऐसे, आई कांट फाइंड द बुक दैट आई एम लुकिंग फॉर, व्हिच आई एम लुकिंग फॉर, राइट, लाइक दिस। द रूम वी स्लेप्ट इन इट लास्ट नाइट वाज वेरी टाइडी। द रूम which we slept in last night was very tidy। That means preposition you will put after verb, after main verb you will put the preposition, then it will hold the correct meaning। We can leave out who, which, that in these sentences। Now you see जो ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनको हम as it is leave कर सकते हैं। Leave means to omit,
इनको छोड़ सकते हैं हम as it is, and then we can remain with the correct sentences. In some of the sentences you don't need who, which, that. अब कुछ ऐसे sentences इस exercise के अंदर जिसके हमें जो है जरूरत नहीं है who, which और that की. You don't need these words. Put them in brackets like this, who, which, that. उनको हमें जो ब्रैकेट में रख देना है जहां पर जरूरत नहीं है, और जहां पर जरूरत है उसको सही लिखेंगे. There we will write it correct so that we can make it. और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे. फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, Where is the pen that I presented you on your birthday? So ये that जो दिया हुआ है ये ब्रैकेट में कर दो बच्चों, क्योंकि जरूरत नहीं है. आप सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, Where is the pen I presented you on your birthday? Where is the pen? कहाँ है पेन? I presented you on birthday. मैंने तुम्हारे बर्थडे पे जो दिया था, राइट. सो दैट को आप लोग इसको ब्रैकेट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस. सो ये दैट जो है, वेयर इज द पेन दैट आई प्रेजेंटेड यू ऑन योर बर्थडे, बन जाता है आपका. ये एग्जाम्पल आप खुद रीड करोगे सभी के सभी बच्चे. दिस एग्जाम्पल यू ऑल विल रीड इट योरसेल्व्स. अब दैट को जो है ब्रैकेट में रख दिया है जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. सी द नेक्स्ट वन, व्हाट हैज हैपेंड टू द pen that was lying on my table. That was lying on my table. अब जो है ये बात कर रहे हैं हम लोग पेन की, जो कि आपके रिलेटिव क्लोज का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है. दैट आपको पहले डिस्कस हुआ है कि अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है रिलेटिव क्लोज के अंदर तो ये रहेगा दैट वाज लाइंग ऑन माय टेबल. क्या लाइंग था, पेन. सो ये दैट जो है सेंटेंस में एज इट इज रहेगा, इसको हमें हटाने की जरूरत नहीं है बच्चों. जब रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव क्लोज के अंदर अगर दैट या विच जो है हु काम करेंगे सब्जेक्ट का तो ये रहेंगे, अगर अदरवाइज तो नहीं रहेंगे. दीज विल बी गॉन, चले जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. सी द नेक्स्ट वन. टू सेंटेंसेज आई हैव डन फॉर यू. फर्स्ट में आपने दैट को ब्रैकेट कर दिया, सेकंड में दैट एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है दैट हमारे रिलेटिव क्लोज का जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सो सब्जेक्ट विल रिमेन एज इट इज. सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग अ रिलेटिव क्लोज विद अ preposition. टेक क्लॉजेस फ्रॉम द बॉक्स. आपको जो है रिलेटिव क्लोज के साथ जो है इनको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं. एग्जांपल देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल. प्रेपोजिशन के साथ करने हैं, राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल यू स्टेड एट. प्रेपोजिशन एट हमने यूज कर दी इसके मेन वर्ब के बाद. हियर इज द बुक. अब इसको लेकर के आपको सेंटेंस बनाना है, राइट. ऊपर से उठाना है बॉक्स से सेंटेंस और उसको लेकर के प्रेपोजिशन को लेकर के सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट सेंटेंस देखो, हियर इज द बुक यू हैव बीन लुकिंग फॉर. देखो भाई बॉक्स में थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट साइड से, हियर इज द बुक यू हैव बीन लुकिंग फॉर. ठीक है, यू हैव बीन लुकिंग फॉर हो जाएगा. सेकंड देखिए, द प्लान वाज अप्रूव्ड बाय द पीपल. अब बॉक्स से उठाना है, द प्लान वाज अप्रूव्ड बाय द पीपल. बाय द पीपल वी टॉक्ड विद. वी टॉक्ड विद हो गया यहां पर. ठीक है बच्चों, वी टॉक्ड विद ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस. प्लान अप्रूवल हो गया था जिनसे हमने बात की. सो इस तरह से आपको प्रेपोजिशन के साथ सेंटेंसेस लगाने हैं और इनको जो है कंप्लीट करना है. 2 sentences done for you, rest you all will do it yourselves. Only 3 sentences are left. Fill in the blanks with that or what. Blanks को fill करना है that or with के साथ. If the sentence is complete without that, put that in bracket.
आई कैन गिव यू ऑल दैट यू नीड। अब दैट हमने लगाया लेकिन दैट की जरूरत नहीं हो, आई कैन गिव यू ऑल यू नीड, सेंटेंस सही बन रहा है। तो दैट को ब्रैकेट में रख दोगे जब जरूरत नहीं है, और जब जरूरत है तो उस दैट को हम एज इट इज पुट कर देंगे। राइट एवरीवन, व्हाट और दैट, व्हाट को यूज हमने किस चीज लिए किया था, द थिंग्स दैट। अच्छा चलो भाई बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है फोर्थ एक्सरसाइज, नोबडी कैन बिलीव व्हाट या फिर दैट में से एक आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें व्हाट आएगा। नोबडी कैन बिलीव व्हाट यू हैव जस्ट सेड, जो भी कुछ तुमने कहा है। नोबडी कैन बिलीव व्हाट यू हैव जस्ट सेड। व्हाट को आप ऐसे इट लिख देंगे, को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी कैन बिलीव द स्टोरी यू हैव जस्ट टोल्ड, दैट को ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि हमें दैट की जरूरत नहीं है यहां पर। nobody can believe, nobody can believe what nobody can believe the story that ब्रैकेट में लिखेंगे you have just said। तो सेंटेंस बनेगा nobody can believe the story that you have just said, जो कि तुमने अभी बताई है या हमें बोली है। राइट एवरीवन, सो सी चिल्ड्रन, हुज को हम लोग कल रीड करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। यू नीड टू कंप्लीट दीज 4 एक्सरसाइजेस, ओनली 3 एक्सरसाइजेस पेंडिंग, 5th 6th and 7th, that we'll do tomorrow. So that's enough for today's lecture. Any one of you wants to ask any question, raise your hands.